Okay, so today's class is about ATP. We have already discussed one of the ATP sessions, which was the moles and quantitative analysis. And today we are moving on to what is called qualitative analysis. Qualitative analysis basically means that this is something where you don't have to do any calculations. You just have to ensure that you can judge things based on the observation, based on what they look like, based on qualitative data like color or bubbles or some other things that are similar to that. Now, there are four main parts of this. One is identifying metal ions. And for that, we have what we call flame test. Second, we have identification of gases. So gases identification. Third, we have cation analysis. And fourth, we have anion analysis. Okay. And these are things that you are expected to remember, even though paper जो ATP का paper होता है, they give you the notes for this in the paper, but paper 2 और paper 1 दोनों में इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो आपको याद करने हैं. So while it helps in ATP, you have to still memorize it for the other two papers. So there are easy ways and techniques to remember things by, and of course the best method to do that is कि अगर आपके स्कूल में lab available है, or if you go somewhere where the lab is available, if you're in Lahore, I can arrange that for you. Then what you have to do is just request your teacher to let you do the experiment at least once. ठीक है? एक दफा at least आप उनसे request करें कि आपको ये test करवा दें, जो भी lab में आप कर सकते हो. If that doesn't work, then you can go to YouTube. I will also be uploading videos on my channel where you can review them. कि अच्छा किस टेस्ट में क्या रिजल्ट्स नजर आते हैं, किस गैस का क्या टेस्ट है, and all of that. But there are other YouTube channels available as well. There's also some videos by Cambridge. Just आपने search करना है Cambridge Resource Plus. So that is a tool that they made in COVID. It's available for free right now. So just go to Cambridge Resource Plus. वहाँ पे बहुत से उन्होंने videos Cambridge ने खुद बना के upload किए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि what you're expected to be able to identify and what you're expected to know. O levels के लिए ज़्यादा material available नहीं है, but Resource Plus पे IGCSE के लिए बहुत चीज़ें available हैं. And they're the same that apply for O levels, so you're not at a disadvantage if you're doing O levels. Okay, so let's start with the flame test. I've already shared the notes with you on WhatsApp, so you should take the notes with you. मैं बस आपको ये बताऊंगा कि how you can easily remember this. There are 6 flame tests in our syllabus. और वो हैं lithium, sodium, potassium, calcium, barium, and copper. Now, these can be difficult to remember. Obviously, किसको colors याद रहते हैं? तो इसको याद करने का हमारे पास एक बड़ा ही simple सा method है. Rainbow colors तो सभी को याद होंगे ना? So just remember the rainbow colors. और हम इनको rainbow colors के लिहाज से arrange कर देंगे. So rainbow colors क्या थे? Red, orange, yellow, green, blue, violet, right? So हम इनको भी उसी लिहाज से arrange कर देंगे. So what's that going to be like? So we'll start with the one that is red, okay? And that is lithium. So lithium is red. Then we will move on to things that are orange. So that is calcium. Then we have yellow, which is sodium. Then we have 2 different green or 2 different shades of green. So जो ज़्यादा green है, जो light green है, वो है barium. और एक है जो कि blue green है, और वो है copper. And then we have lilac color, which is very similar to violet. So वो होगा lilac, और वो है potassium का. So just remember this order for the rainbow colors. और अगर आपको रेनबो कलर्स याद हैं, जो मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग आपको फिजिक्स में या वैसे बचपन से याद हैं, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दैट इज हाउ दिस गोज. ऑफ कोर्स कोई तरीका आपने कोई निमोनिक डिवाइस याद कर लें टू मेक दिस अप. ओके, सो इट्स नॉट इजी टू बिल्ड और टू रिमेंबर दिस, एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट दैट गोज इनटू दैट, लेकिन हमने याद करना है. And in my experience, having a mnemonic device क्या होती है कि आप इससे कोई ऐसा एक्रोनिम बना लें
या कोई ऐसी याद करने के लिए फ्रेज बना लें जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद रहे. Remember, the more ridiculous it sounds, the better it is to remember. Okay. Now, I asked ChatGPT to make this for me. And I did not like what I got, but here's what I got. Little Kathy naps barely, cuddling kittens. So as you can see here, जो हमारे first letters हैं, they represent what we have to remember. So I'm asking it to make another one, ताकि अगर किसी को ये याद नहीं रहा तो एक और से याद हो जाए. It takes a while, it's a little slow right now. खैर, so once it comes in, तो हम उसको याद कर लेंगे. Okay, just remember, the more ridiculous, you can make your own. कोई भी mnemonic device बना ले, and you should be able to make this, or you should be able to remember this. So that is how you can identify the colors. अगर वैसे आपको colors में बता दूं, this is yellow, this is orange red, sorry, this is red, this is orange red, this one is yellow, this one is light green, this is blue green, and this is lilac. All right, so any question on this? सबको समझ आ गया that this is, if you burn these wires, कोई copper की wire है उसको आप burn करते हो, you are expected to see blue color. In fact, fireworks में भी जो हमारे पास color होते हैं वो यही हैं. Another mnemonic to remember this by is little camel needs bananas, cows kick. Again, जो भी आपको याद करने में आसानी है, use that one. All right, so that is the flame test. अब हम आगे चलते हैं. Let's talk about test for ions. अब कोई भी जो salt है, इसको हम salt analysis बोलते हैं. The idea of salt is that salt has cation and anion in it. So if you get any unknown salt, आपको एक salt मिला है जिसका आपको नहीं पता कि इसमें क्या है, then you can easily check what that salt is. So एक दो टेस्ट हम करेंगे और उस टेस्ट के एंड पे हमें पता लग जाएगा what salt you're dealing with. A couple of things before you do the test. We will need to dissolve the salt in water to start this test. So it has to be a soluble salt. हमारे सिलेबस में insoluble salts के टेस्ट नहीं है. So we take the salt, we dissolve it in water, okay. Then we will test it for cation separately and for anions separately. तो अभी मैं आपको सिर्फ cations का टेस्ट सिखा रहा हूं. Now to do the test, we have what we call reagents. Reagents क्या होते हैं? The chemicals that we use to do this test. So there's the sodium hydroxide solution. So we take a few drops of sodium hydroxide and we use that. And the other one is aqueous ammonia, जिसको हम ammonium hydroxide solution भी बोलते हैं. Okay, so we have these two reagents. So let's start with the first one. अब हमारा टेस्ट क्या होगा? We will do two tests. पहला टेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं color test. Color test basically reacts whatever unknown cation you have with the hydroxide ion. Do you see कि ये दोनों hydroxides हैं? तो अगर कोई भी cation जो है वो acidic होगा या कोई ऐसा मेटल होगा जो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है, तो वो टेस्ट हम चेक कर सकते हैं. सो विल टेक द कैटाइन. इफ इट इज एसिडिक इट विल रिलीज सम सॉल्ट, वाटर या कोई गैस रिलीज करेगा. तो हमारे सिलेबस में एक ही एसिडिक कैटाइन है, वो है अमोनियम. लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ देम वी नो कि अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड एंड इट विल मेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल होता है. Similarly, अगर copper 2 हुआ तो copper will react with hydroxide and make copper hydroxide, which is again insoluble. तो हम सबके हाइड्रोक्साइड क्रिएट करेंगे और उन हाइड्रोक्साइड्स के कलर को देखेंगे कि वो कलर कैसा है. So to do the color test, we add a few drops of NaOH. We'll start with NaOH, okay? So we'll add a few drops of sodium hydroxide. ठीक है. So we do that. And what do we see? Color test है तो obviously हमें colors नजर आने चाहिए. So we'll have three results. One option is that a gas is evolved. Okay, so that is one option. कि कोई gas release होगी. Second option is that we will see
white precipitate. The color white tells me that I do not have transition metal ion. But examiner does not value negative test. Negative test क्या होता है कि मैं कहता हूं कि ये चीज ये नहीं है. That is not what the examiner is asking. Examiner is asking मुझे बताओ ये है क्या? Not a negative test, a positive test. मुझे बताओ कि क्या चीज है. So when we say white precipitate, we are just confirming there is no transition metal ion. Similarly, अगर colored precipitate होगा, तो colored precipitate, PPT means precipitate. It's a solid that is coming out of a solution. What reaction is this? The reaction is precipitation. Salt preparation में हमने पढ़ा था ना कि एक insoluble salt कैसे create करते हैं. तो हमारे पास जो भी salt है वो dissolve हुआ है और हमने एक और sodium hydroxide salt उसमें add कर दिया. तो वो precipitation reaction कर रहा है. अब हमारे पास colored precipitate अगर आता है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? If we get colored precipitate, that confirms that there is no transition. There is a transition metal ion. So the colored precipitate tells me that I have a transition metal ion. It does not confirm which one right now, but ये कि transition metal है. Okay. Gas evolved अगर होगी तो कौन सा होगा? Ammonium. Reason? Ammonium is acidic, sodium hydroxide is alkaline. दोनों रिएक्ट करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है. अच्छा, अगर व्हाइट प्रेशर हुआ तो उससे हमें कंफर्म हो रहा है कि एल्यूमिनियम है या जिंक है या कैल्शियम है. तो इन तीनों में से कोई एक हमारे पास, या इवन ऑल थ्री भी हो सकते हैं. दे आर अवेलेबल हियर इफ आई हैव व्हाइट प्रेशर. अब ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर भी हमारे पास तीन डिफरेंट कलर्स आएंगे. द थ्री कलर्स दैट वी हैव आर द प्राइमरी कलर्स. सो देयर द रेड कलर, there's the green color, and there's the blue color. Red, green, blue, primary colors. अगर red है तो that confirms iron 3. अगर green है तो iron 2 और chromium 3, and blue है तो copper 2. ठीक है. So based on this we have narrowed down our observation. हमारे पास 8 different cations थे, लेकिन just by adding a few drops of sodium hydroxide and looking at the color or whatever is happening, we are able to see कि या तो व्हाइट प्रेशर है तो इन तीनों में से ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे. अगर ट्रांजिशन मेटल आ गया तो ऑब्वियसली ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे. और अगर गैस इवॉल्व हुई है तो कंफर्म हो गया कि अमोनियम है. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, कलर टेस्ट. वी हैव डन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. द केमिस्ट्री बिहाइंड इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके. नाउ देयर इज द थिंग कॉल्ड complex formation. Now complex formation, the detail of this is not in our syllabus, but just know that if you add extra alkali, then it is possible for metals to form complex. और वो complex या तो dissolve होते हैं या वो insoluble होते हैं. तो ये जो precipitate बन रहा है ना, we can convert it to a complex by simply adding alkali in excess. तो अब हम उसको टेस्ट करेंगे और उसको हम बोलते हैं solubility test. So this is the second test that we have. Solubility test. Of course, solubility test का मतलब ये हुआ कि जब आप add sodium hydroxide in excess करेंगे, remember, do not do it right away. ये नहीं करना कि आपने फौरन ही hydroxide excess में डाल देना है. We need to first see what precipitates are getting, and then we will use the precipitates का result and then form complex. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड कर देंगे. अब ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट है, या वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा या वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा. अगर उसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इफ इट डिसॉल्व्स, दैट शोज इट हैज मेड अ कॉम्प्लेक्स. एंड टर्न्स आउट all amphoteric ones will do this. All amphoteric oxides, yeah, all ions with amphoteric oxides dissolve. ये एक पॉइंट है जो आप इसके ऊपर याद कर सकते हो. So here's what will happen. I add sodium hydroxide in excess. Either the precipitate dissolves or precipitate is insoluble. Precipitate remains. So I have these two options. Either it will dissolve or it will not dissolve. Right? There's no third option about this.
इफ इट डिसॉल्व्स तो वो या तो क्रोमियम है, या एल्यूमिनियम है, या वो जिंक है, और अगर नहीं होता तो वो बाकी सब है, राइट? क्रेजी, easy way to remember this. Crazy. All right. So these are amphoteric oxide making elements. ये क्रोमियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और ये तीनों यहां पर डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो हमें एम्फोटेरिक वाला भी याद करना है और हमें साथ में ये भी याद हो गया। So clearly we can see that they will dissolve in excess of sodium hydroxide. Now remember, they will first form precipitate if you let it, if you do the color test, if you add sodium hydroxide in small amounts, and then if you add it in excess, आपने extra add किया तो वो फिर dissolve होंगे। If a student add sodium hydroxide बहुत तेजी से, तो फिर precipitate बनने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा, और वो precipitate बनने से पहले ही, मतलब बनते साथ ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्यू ड्रॉप्स की बजाय डायरेक्ट एक्स्ट्रा डाल दिया। So you have to be careful. जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे लैब में, you have to make sure that you don't add it right away. You first add a few drops using a dropper, of course, and then you add it in excess. Excess का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, and you add a few drops, then उसको 2/3 fill कर लें, and that way you will know what is happening. Okay, so that is the testing with sodium hydroxide. Any questions on this? Okay, now I'm going to do color test, but this time I'm not using sodium hydroxide. Now I'm going to do the same test, but with ammonium hydroxide. तो मैंने अपना reagent change कर लिया, ammonium hydroxide, जिसको हम aqueous ammonia बोलते हैं, वो भी करूंगा। मेथड वही है, कलर टेस्ट होगा पहले, लेकिन अब क्या हुआ, मैं अमोनियम के साथ अमोनियम को रिएक्ट करवा सकता हूं? नहीं करा सकता। So instead of getting a gas, there will be no reaction. And there's two things that don't do any reaction: calcium and ammonium. So calcium yahan se idhar aa gaya. With ammonium, calcium doesn't react. And with ammonium, ammonium also doesn't react. वो अपने आप के साथ थोड़ी react करेगा. So now we are down to 2 white precipitates. ठीक है? Everything else remains the same. So the only difference in sodium hydroxide and ammonium hydroxide, calcium doesn't react with ammonium, and ammonium also doesn't react. Ryan's question is, why are we using aqueous solution and not dilute? So Ryan, dilute simply means that you have a lot of water, and concentrated means that you have a lot of the solute. So as I was saying, in this situation, what will happen is that we are having ammonium hydroxide instead of sodium hydroxide. So the only change that will happen is that ammonium doesn't react and calcium also doesn't react. ठीक हो गया? Everything else remains the same. Now, what about complex formation? When we add ammonium hydroxide in excess, not sodium hydroxide, ammonium hydroxide in excess, तब कौन कौन से डिसॉल्व होते हैं मैं आपको भी बताता हूं। We will get copper and zinc, just these two, and they will dissolve. The rest of them will not dissolve. तो जरा एक दफा इसको देखते हैं। अगर आप वाइट प्रेसिपिटेट को देखो ना, तो उसको याद करने की एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, 0 1। कैल्शियम डिसॉल्व्स इन 0। कैल्शियम दोनों में डिसॉल्व नहीं होता। एल्यूमिनियम पहले में डिसॉल्व होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है, और अमोनियम में डिसॉल्व नहीं होता, और जिंक दोनों में डिसॉल्व होता है। So as far as complex wala reaction is concerned, yeah, as far as solubility is concerned, calcium dissolves in 0, aluminum in 1, and zinc in both of them. So 0 1 2, an easy way to remember कि white precipitate कौन कौन सा डिसॉल्व होता है। सिमिलरली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स दो हैं, एक कॉपर है, एक क्रोमियम है, जो कि C से स्टार्ट हो रहे हैं। In the first one, chromium dissolves. In the second one, the ammonium, copper dissolves. So chromium with sodium hydroxide, copper with ammonium hydroxide.
कॉपर का कलर लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट एग्जाम में वो लिखता है, वो आप ब्लू भी लिख सकते हो एटीपी में, बट एग्जामिनर जब एमसीक्यूज वगैरह में देगा तो वो लाइट ब्लू बोलेगा. सो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा और फिर व्हेन कॉपर डिसॉल्व्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, then it forms a dark blue solution. Okay, so that solution again वो हम blue लिख सकते हैं. We don't have to say dark blue, but examiner if they give you the question in MCQs वगैरह तो वो आपसे dark blue solution ही बोलेगा. So you can write blue, you can write blue precipitate, you don't have to write light blue. If you do, that's fine. You don't have to write dark blue solution, but if you just write blue, that's also fine. So that is how we can easily figure out what cation I have. Simple दो टेस्ट करने, color test and solubility test. Color test with sodium hydroxide एक result, solubility test with sodium hydroxide एक result देगा. I will share these notes with you. They're easy way to remember this. All right. Now let's move on to the last of these, which is basically test for anions. So as you know, anions, they are the negative ion in the salt. So अगर हमें किसी salt का पता करना है कि वो कौन सा salt है, तो obviously हमें positive और negative दोनों ions का पता होगा, तो हमें salt के बारे में पता लगेगा. हमारे syllabus में 6 ions हैं, but उन 6 में बहुत सी चीजें common है. 2 of them give us gases, and the rest of them they give us precipitates. ठीक है, और एक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है. तो ये इस तरह से हमारे पास अब हो गए 7, क्योंकि इस साल उन्होंने 2 ऐड किए हमारे सिलेबस में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो टेस्ट बिल्कुल ही अलग है बाकी सबसे, वो ये कि यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एल्यूमिनियम फॉयल एंड हीट इट. अगर आप ये करो, ये आपका एक टेस्ट है, तो होगा क्या? अगर इससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है तो ये आपको कंफर्म है दैट दिस इज नाइट्रेट आयन. सो देखिए हमारे पास 2 टेस्ट हो गए, 2 आयंस हो गए जिसमें अमोनिया रिलीज हो रही है. अगर हीट करके अमोनिया रिलीज हो रही है तो ये मोस्ट लाइकली नाइट्रेट है. लेकिन अगर सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके अमोनिया रिलीज हो रही है, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके रिलीज हो रही है, हीट नहीं किया, तो फिर अमोनियम है. सो अमोनियम अमोनिया रिलीज करता है हीट के बगैर, और नाइट्रेट अमोनिया रिलीज करता है बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम फॉयल. दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं. दैट्स अ कॉमन थिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. Okay, done with this. The second test that we do, and remember this test is for all the subsequent ions that we do. You will add dilute acid. Usually we prefer to add nitric acid, लेकिन जरूरी नहीं है. जब आप dilute acid add करोगे तो उससे बनेंगे effervescence. Effervescence का मतलब होता है bubbles, rapid bubbles. And of course, the moment you see the effervescence, you have to test. Every time you see bubbles, every time you see effervescence, you have to test for the gas. So if you add dilute acid and then you see effervescence, and then you do the test for carbon dioxide, and you see carbon dioxide released, तो उसका मतलब हुआ कि the ion that you have is carbonate. So every time you see bubbles, you have to do the test for that gas. Ammonia का test क्या है? Ammonia turns red litmus blue. So अगर बबल्स आ रहे हैं, आप रेड लिटमस रखते हैं, वो ब्लू हो जाता है, मतलब अमोनिया के बबल्स आ रहे हैं, अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन कंफर्म हो गया. अगर बबल्स आ रहे हैं और आपने उसे लाइम वाटर से पास किया उस गैस को, एंड इट टर्न्स इट मिल्की, दैट कंफर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच मींस द आयन रिस्पांसिबल फॉर इट वाज कार्बोनेट. और ये क्यों करता है कार्बोनेट? बिकॉज कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन व्हेन यू ऐड एसिड टू इट. तो ये दूसरा टेस्ट हो गया हमारे पास. अच्छा, अब बाकी जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उन सब में पहले आप डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे. कौन सा वाला? नाइट्रिक एसिड. क्यों? नाइट्रिक एसिड इज स्नैप, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, आपके रिजल्ट्स को खराब नहीं कर सकता वो. एंड व्हाई आर वी एडिंग एसिड एट ऑल? टू डिस्ट्रॉय कार्बोनेट. सो एडिंग एसिड डिस्ट्रॉयज
कार्बोनेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, कार्बोनेट खत्म, बिकॉज कार्बोनेट्स आर ऑल इनसॉल्युबल। तो इसके पीछे पूरी रीजन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और सॉल्युबिलिटी टेस्ट हैज अ लॉट टू प्ले हियर। अच्छा ठीक है, अब हमने डिस्ट्रॉय कर दिए कार्बोनेट्स को, ठीक है। सो फॉर सब्सिक्वेंट टेस्ट्स add dilute nitric acid first। कॉन्सेंट्रेट नहीं डालना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट जो है वो फिर ब्रेक डाउन करवा देता है कुछ आयंस को, बट हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब डाइल्यूट एसिड ऐड करके हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम बेरियम सॉल्ट ऐड करेंगे या हम सिल्वर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो आपने नाइट्रिक एसिड ऐड किया ना, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो। तो ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा, व्हाट डज सिल्वर नाइट्रेट डू? सिल्वर नाइट्रेट के पास तीन ऑप्शन है, ईदर इट विल गिव अस व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इट विल गिव अस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्रीम कलर भी बोलते हैं, और इट विल गिव अस येलो प्रेसिपिटेट। सो नोट कर लें इन बात को, इफ यू हैव सिल्वर एंड इट गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट, तो ये हैलोजन है। व्हाट हैलोजन? द क्लोराइड फॉर व्हाइट, ब्रोमाइड फॉर क्रीम, आयोडाइड फॉर येलो, एंड यू कैन सी कलर डार्कन्स डाउन द ग्रुप। सो सिल्वर के साथ हेलाइट कलर देगा, प्रेसिपिटेट देगा। But if I don't add silver, instead I add barium nitrate, तो बेरियम के साथ सल्फेट आयंस प्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। सो बेरियम के साथ हमारे सिलेबस में व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा सल्फेट का। ऑफ कोर्स और भी हैं, सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन हमारे सिलेबस में उस पर क्वेश्चन नहीं आया। सो अब आप देख रहे हो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर के साथ आए तो क्लोराइड है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम के साथ आए तो सल्फेट है। और एक आखिरी है, देयर इज वन आयन दैट वी कैन ऑक्सीडाइज टू नो कि वो कौन सा है। इन सब में कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। हमारे सिलेबस में एक ऐसा आयन है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वी विल यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या है, एड KMnO4, एंड दिस मस्ट बी एसिडिफाइड, अदरवाइज वो अच्छी तरह रिएक्ट नहीं करता। And what does KMnO4 do? Nothing new for us. We have already studied it in redox reaction. It goes purple to colorless. And if it does that, the ion responsible for doing this is sulfite. Why? Sulfite can oxidize and make sulfate. And that is how we know that ye oxidize ho gaya. So we have these 7 anions to test for जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट एनाइन वी हैव, और कैटाइंस का भी पता चल गया, एंड उससे पहले फ्लेम टेस्ट का भी हमने याद कर लिया। सो बेस्ड ऑन दीज वी कैन इजीली फिगर आउट व्हाट सॉल्ट वी आर डीलिंग विद, व्हाट सॉल्यूशन वी आर डीलिंग विद, व्हाट मेटल वी हैव, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड qualitative analysis. Moment's question is that why do we need to add aluminum foil? Now, the exact reasoning for why aluminum reacts with nitrate, we don't need to get into that. Basically, aluminum helps break down the nitrate ion. ठीक है, हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, but just know that sodium hydroxide in the presence of aluminum will break down the nitrate and release ammonia. ठीक है, उसमें रिडक्शन भी इन्वॉल्व होती है ऑब्वियसली, ठीक है। सो दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।